आपकी फेवरेट फ़िल्म कौन सी थी? मेरी फेवरेट मूवी थी नदीम और बाबरा शरीफ की मूवी ज़िंदगी। 1977-78 में रिलीज़ हुई थी। तो फर्स्ट डे फर्स्ट शो हमने जाके देखा। बहुत अच्छी मूवी थी। My favorite Pakistani movie would have to be Janan. It was released around 2015 or 16. I think the movie is basically about this young girl who experiences a cultural shock when she returns home to her Pakhtun town after living most of her life abroad. इस movie में they have shown our rich Pakhtun culture. It's got romance, comedy, but at the same time, it also highlights some really important social issues in the background. Plus, the entire film was shot in Sawat, so it has captured some really beautiful scenic views. And overall, it's just a very well-rounded, feel-good movie that you can watch with your entire family. It shows a positive image of Pakistan and our culture. मेरी फेवरेट फिल्म थी 1983 में आई थी दहलीज, शबनम और नदीम की। वो मुझे पसंद थी। मेरी फेवरेट मूवी इट हैज़ टू बी शाह. It is based on a real incident of boxer Hussein Shah. और what I really liked about the movie was the rawness and the cinematics of the movie जो कि डायरेक्टर ने शो किए थे उसमें. मेरी फेवरेट पाकिस्तानी मूवी पंजाब नहीं जाऊंगी है, और उसकी रीज़न ये है कि उसके जो डायलॉग्स हैं वो बहुत अच्छे लिखे हुए हैं और उसकी जो ओवरऑल स्टोरी है वो भी अच्छी है। मेरी फेवरेट पाकिस्तानी मूवी जो रिसेंटली लॉन्च हुई है वो है मौला जट. इट इज़ अ सिनेमैटिक एक्सपीरियंस, एक्सलेंट एक्टिंग और आई जस्ट लव इट. मेरी फेवरेट पाकिस्तानी मूवी, क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने पाकिस्तानी मूवीज़ देखना शुरू की हैं, तो हैज़ टू बी मौला जट. और इट्स समथिंग कि इट वाज अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस बिकॉज हमने इमेजिन नहीं किया था कि पाकिस्तानी मूवीज़ इतना अच्छा सिनेमेटोग्राफी में आगे चली जाएंगी. और इट वाज समथिंग डायरेक्शन बहुत अच्छी थी उसकी, एंड द डायलॉग स्पेशली बिकॉज आई एम अ पंजाबी, सो वो बहुत अच्छा लगा वो पंजाबी सुन के. और it was something, it was very different. You would see women coming in like heroine वाले जो proper roles होते हैं. They had more power in the movie, which was very nice to see. Pakistani cinema had its golden age during the 1950s to the 1970s. During this period, the industry produced some of its most iconic films and established many talented actors, directors, and technicians. The films of this era were marked by their high production values, melodious songs, and socially relevant themes. Films like Yakke Wali, Jaga Hua Savera, Andalib, Chanve, and Lakhon Mein Ek are still considered iconic in the history of Pakistani cinema and are often referenced as examples of the industry's golden age. ये सोचा है हमने कि अब जिंदगी भर तुम्हारी मोहब्बत को सजदा करेंगे, अकेले न जाना. कि हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री का डिक्लाइन शुरू हुआ वो 80s से शुरू हुआ ज़िया-उल-हक के दौर में. मिस्टर भुट्टो की हुकूमत ख़त्म हो चुकी है. सारे मुल्क में मार्शल नाफिज कर दिया गया है. कौमी और सूबाई असम्बलियाँ तोड़ दी गई हैं. General Zia-ul-Haq implemented his Islamization policies, which included heavy-handed censorship policies for both entertainment and press sections of the mass media. Several Pakistani films like The Blood of Hussein, Aurat Raj, and even Maula Jat were banned before their release. आपने सिनेमा में सबसे पहली मूवी कौन सी देखी और आपका एक्सपीरियंस कैसा था? सबसे पहली सिनेमा में मैंने मूवी देखी, पाकिस्तानी मूवी, उर्दू मूवी थी आईना.
The year 1977 began with the imposition of martial law. However, for the film industry, it started on a happy note with the release of Aina. Aina was a mega hit, and it became Pakistan's only Urdu film to have a crown jubilee. During the time period 1983 till 1987, the average population of the country jumped from 71.1 million to 96.2 million within a period of 5 years. However, the average number of films produced annually declined from 103 to 96.2. Although the number of films decreased during Zia's regime, yet super-hit films like Bandish, Lazawal, Salakhen, Dehleez, and Aina were able to keep cinema alive during this time period. Actors like Sultan Rahi, Shabnam, Babra Sharif, and Nadeem were backbone of the cinema at that time, and the on-screen couple of Shabnam and Nadeem was liked by the audience all over Pakistan. ਕਦੇ ਟਲਦੇ ਆ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਚੋਂ ਗੱਲ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸਮਤ ਦੀ ਦੇਵੀ ਹੱਥ ਫੜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਹੈ ਬੜੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ दो योरा बेटर हो जाओ फिर भी टेंशन नहीं मेरा केस बिल्कुल निकल रहा है यहाँ बैठो पता है क्या था आज मैं सिक्योरिटी ऑफिस तशरीफ ले चली क्यों झूठ बोलूंगी मैं क्यों झूठ बोलूंगी वो तो मुझको ना अपना भी बेड़ा गर्क कीता है ते यारा दा भी नंकी दा सफर जिंदगी मौत दा जुआ हुंदा है किस्मत से ज्यादा नहीं वक्त से पहले नहीं आजकल दोस्त दुश्मन का कोई पता नहीं चलता वो तुझे छोड़ेंगे नहीं मेरा क्या फायदा होना है Over the years, Pakistani cinema has now evolved with faster storylines, better technology, a different age of cinema is born. Films like Zindagi Tamasha and Joyland have addressed sensitive and controversial topics of the society. Although they have faced censorship issues and bans, but still the presence of such films show the evolution of Pakistani cinema. तुम्हें कनाडा में इतनी रिप बॉडी कहीं नहीं मिलेगी Oh my God. सबका यही रिएक्शन होता है ओह माय इसे कमरे में ले जा आओ यूके में सेटल्ड है असिस्टेंट प्रोफेसर लगा था मेरी यूनिवर्सिटी में 2 सेमेस्टर के लिए और तुमने फौरन फंसा लिया हाँ ऐसी शक्ल कौन रेजिस्ट कर सकता है भाई ताल्लुक कहाँ से है तुम्हारा हाँ जी पंजाब से पंजाब से कोई आम बंदा नहीं सरदार जट दा पुत्र People who have witnessed cinema in the 1970s and 80s and are now witnessing the cinema of the 21st century have a different perception of the movies and films that are produced now in comparison with the ones that were being produced during their time period. आपने अब का सिनेमा भी देखा है जब इस जनरेशन के एक्टर्स मायरा खान, फवाद खान और मूवीज़ आ रही हैं मसलन मौला जट हो गई, लॉर्ड वेडिंग, ये जवानी है दीवानी, और आपने अपने टाइम का सिनेमा भी देखा है जब दहलीज, सलाखें इस तरह की फिल्म्स आती थी और नदीम, शबनम जैसे एक्टर्स होते थे. तो आपको कोई फ़र्क नज़र आता है उस टाइम की डायरेक्शन में, एक्टिंग में, स्टोरी लाइन में और अब की? आजकल बहुत सेंसिटिव मौजू पे बनती हैं फिल्में जो कि अक्सर बैन हो जाती हैं और वो बातें उस फिल्म की बातें हम फिर घरों में भी डिस्कस नहीं कर सकते. और स्टोरी लाइन और जहाँ तक डायरेक्शन की बात है तो वो उस टाइम के ज़्यादा अच्छी थी. आजकल के जो अदाकार हैं जैसे मायरा खान है, हमजा अली अब्बासी है, ठीक है बिल्कुल उनका कोई मेल नहीं है, लेकिन उस वक्त की स्टोरी लाइन और डायरेक्शन ज़्यादा अच्छी थी आज के दौर से. अब सिनेमा काफ़ी बदल गया है और सोसाइटी के काफ़ी सेंसिटिव टॉपिक्स पे मूवीज़ बनाई जाती हैं. आपको क्या लगता है कि उस वक्त अगर ऐसी मूवीज़ बनाई जाती हैं ऐसे मौज़ूआत पे जैसे कि जॉयलैंड, तो क्या लोग उन्हें देखने जाते? सेंसिटिव टॉपिक पे अगर उस ज़माने में पहले तो जहाँ तक मुझे अंदाज़ा बनी नहीं है, लेकिन अगर बनती तो वो ज़रूर पढ़ा लिखा तबका हमारा ज़रूर जाता, लेडीज़ भी जेंट्स भी, और बिल्कुल देखा जाता. लेकिन ऐसे मौजू आजकल ज़्यादा नज़र आ रहे हैं. उस टाइम कोई ऐसा मौजू पे बनाई नहीं गई, लेकिन अगर जब बनाई जाती तो लाजमी हमारा तालीम याफ्ता तबका ज़रूर उसको देखता और अप्रिशिएट करता और पसंद करता. आपने 21वीं सदी का भी सिनेमा एक्सपीरियंस किया है, तो आपको क्या लगता है कि उस दौर की फिल्म्स और आजकल की फिल्म्स कोई मुकाबला है? 21वीं सदी का सिनेमा जदीद है. सिनेमा बहुत अच्छे, इनके कैमराज, इनकी शूटिंग, इनका तरीक़ाकार जो बहुत जदीद है, बहुत साइंटिफिक है.
उस ज़माने में सिंपल एक कैमरा होता था, उसी से शूटिंग होती थी, लेकिन उस ज़माने की मूवीज़ का जो स्टोरी, डायरेक्शन और लिरिक्स और डायलॉग, मतलब वो बिल्कुल आजकल का सिनेमा नहीं मुकाबला कर सकता उस ज़माने में। सिर्फ जदीदियत आ चुकी है। अब देखें, उस ज़माने की मूवीज़ थी सलाखें, रास्ते का पत्थर, सिंपल मूवीज़ थी, लेकिन बहुत अच्छी और बहुत अरसा फैमिलीज़ के साथ देखी जाती थी और बहुत अरसा सिनेमा में खड़ी रही। The state of Pakistani cinema has now been declining. The last decade saw the smallest number of films ever produced in the Pakistan in any language. The number of cinemas kept declining. Struggling to keep up standards, Pakistani cinema is in dire need of a revival. To bring back that golden age of cinema, the audiences must support this struggling industry.